In today's video, we are going to learn about ribosomes and the subtopics that we are going to cover in this video is firstly the introduction, then the explanation, function, and it is a quiz for you guys in the end. So, ribosomes. Ribosomes is basically a non-membrane bounded organelle. The cell contains many tiny granular structures known as ribosomes, as you see in this picture right here, right? This teeny blue colored circle shaped structure, these are known as ribosomes, right? And the first person ever to study ribosome was Pillard in 1955. He was the first one who studied ribosomes, that there is a structure that is non-membrane bounded and it is a very teeny granular structure known as ribosomes, as you can see in this picture. Okay. Then जो यूकेरियोटिक राइबोसोम होता है, it is composed of an equal amount of RNA and protein. Hence, they are the ribonucleoprotein particles, right? And the RNA that is present in the ribosome, it is known as the ribosomal RNA. This one is the ribosomal RNA. ठीक है. राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, राइट. या तो वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर वो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एज टीनी ग्रेन्यूल्स. लाइक अगर हम देख रहे हो इसी पिक्चर में, अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ पे वो एज अ फ्री फ्लोटिंग सब्सटेंस आपको नज़र आ रहे हैं इन दी साइटोप्लाज्म. लेकिन जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो वहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वहाँ पे आपको राइबोसोम्स अटैच टू them नज़र आ रहे थे, right? So it exists in two forms, either free floating, either attached to ribosomes, right? उसके बाद जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है, ईच यूक्रियोटिक राइबोसोम्स का जो हमारे पास आरएनए होता है, इट एग्जिस्ट इन टू सब यूनिट, राइट? द स्मॉलर सब यूनिट एंड द लार्जर सब यूनिट. अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे एक ज़्यादा आपको क्लियर डायग्राम नज़र आ रही है, क्लियर रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है ऑफ द स्मॉलर एंड ऑफ द लार्ज और द बिगर सब यूनिट, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो लार्जर सब यूनिट है, इट सेडिमेंट एट 60s. दिस वन इज द लार्जर वन, लार्जर सब यूनिट, it sediments at 60s, right? और जो smaller subunit है, this one is the smaller subunit. It sediment at 40s, right? और ये जो two subunits हैं, अगर इनकी attachment हो जाए एक दूसरे के साथ तो they both form 80s particle. ये जितनी भी अटैचमेंट है ये मैग्नीशियम आयन जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और उनकी प्रेजेंस से ये कंट्रोल होती है, ठीक है. दिस इज होल द यूकेरियोटिक राइबोसोम सब यूनिट इज अबाउट, राइट? Then there are some of the function that ribosome performed. First is that they are minute particle that consist of RNA and protein, and they function to synthesize protein. Protein synthesis is a function that they performed. Then ribosome can be found either floating within the cytoplasm or they are attached to the endoplasmic reticulum.
राइट। जो न्यू राइबोसोम्स होते हैं दे आर assembled इन द न्यूक्लियोलस, from where they are transported to the cytoplasm via the pores in the nuclear membrane. So the factory of ribosome is the nucleolus. Factory of ribosomes is nucleolus, right? And they जबकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसकी राइबोसोम्स है. जो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है दैट इज द न्यूक्लियोलस एंड द factory of protein synthesis is ribosomes, right? So here you can see a picture as well that is showing you the ribosomal larger subunit and then the smaller subunit. Then हमारे पास messenger RNA और transfer RNA है and ribosomes as well. Then there is a quiz for you guys. So each eukaryotic ribosome consists of dash subunit, one or two or three. So as we all know that there are two subunit, the large subunit and the smaller subunit. So here the correct answer is two. Um, Let me circle it a little clear, right? And the larger subunit sediments at 60s, 40s, or 80s. So here we know that the larger subunit sediments at 60s, right? 40s तो smaller subunit का sediment होता है और 80 is together, right? So this conclude our today's lesson. If you guys got any query, ask them below and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching.